So basically this is lecture 28. Okay. In this lecture we are going to discuss about the types of DAC. Okay, digital to analog converter. Digital to analog converters. Okay. In previous lecture we have seen the just opposite A to D, ADC, analog to digital converter. Okay. So first one we will talk about this weighted resistor type DAC. Okay, कि ये weighted resistor type DAC होता क्या है और इससे conversion कैसे होता है. Okay, so let's start with this circuit diagram, and this is important. So just draw the circuit diagram. Okay, I'm just going to draw. So just draw this diagram. Okay. So in this diagram, we are using one op-amp over. So op-amp basically, what is this? Operational amplifier. One feedback resistance we are using. So that is your RF. Okay. Okay, so just draw this diagram. So in this diagram, we are using one op-amp over here. So this is your operational amplifier. And as the name suggests, okay, name हमारा क्या है? Weighted resistor, DAC. Okay, so weighted resistor digital to analog converter. Okay, so weighted means you can see here a number of resistor we are using here. So
suppose you have n bit, okay, n bit DAC, मतलब जो n bit data को convert कर सके digital to analog. Okay, so in this figure you can see here the resistor 2R, 2 square R, अगर और resistor होता तो 2 to the power 3 R up to 2 to the power n R. So this diagram or this circuit diagram is for n bit. Okay, n bit का data है उसको हमें convert करना है. That's why we are using n bit number of transistor or number of resistors. Now weighted, why we are saying weighted? Because ये weight दे रहे हैं हम. You can say here 2R, 2 square R, 2 to the power 3R. So weight हम एक तरह से assign कर रहे हैं in resistors को. So that's why it is not weighted resistor DAC. ठीक है? Now here you can see ये देख रहे हैं आप? This is your ground point. Okay, so ये आप circuit जो देख रहे हैं, that is your ये वाला portion, ये वाला, that is working as a switch, open and close. Okay, कैसे work कर रहा है? Open and close. Clear? So whenever this value और ये जो value है यहाँ पे से you can see here A1, A2 up to AN. These are the distal weights. Okay, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 and 0. सो जो डेटा आप दे रहे हो जिसको आपको कन्वर्ट करना है वो आप दे रहे हो इन A1, A2, AN पर. ओके, एंड दिस all the lines is connected with minus VR. एक रेफरेंस वोल्टेज लिया है हमने, so उस वोल्टेज से हमारे ये डिजिटल बिट्स कनेक्टेड है. So whenever the value is 1, ओके, अभी हम सारा एक्सप्लेन करके देख लेंगे. So whenever the value is 1, ये क्या होगा? सर्किट क्लोज हो जाएगा, मीन्स ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा. एंड whenever the value is 0, तो वो ओपन रहेगा, मतलब वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा रेजिस्टेंस का. क्लियर? सो सबसे पहले तो हम इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो गए, A1, A2 अप टू AN, नंबर ऑफ बिट्स हो गई जो आप इनपुट को दे रहे हो, माइनस VR इज योर रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ पे एक ओप एम्प लगा है, RF इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट. क्लियर? नाउ इन दिस डायग्राम वी आर कंसीडरिंग कि जितने भी R हैं, ये जो आप R देख रहे हो, ये वैल्यूज जो देख रहे हो आप, ओके, इन this diagram all the are equivalent to RF. सबको हम सेम ले रहे हैं, जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू के इक्वल ले रहे हैं. ओके, सो 2R will be 2RF, 2 square R will be 2 square RF. इस R की जगह RF both are same. Okay, so now you have to remember some important point over here. I'm just writing the important points over here. Okay, so just I'm writing the important point. You have to remember, or you have just write it down as the name suggests. Okay, so okay, can we can go through from this slide. So there are some important points over here you can say. So just quickly we can see.
As the name suggests, it's having binary weighted like 2r, 2 square r, 2 to the power 3r up to 2 to the power n. So जो ये values थी इनकी बात कर रहे हैं. So on the basis of these register value, okay, the name is weighted register, DAC. Okay. For 4-bit data, so suppose we have 4-bit data. Okay, so we can say we have A3, A2, A1, A0. 4-bit data conversion, you have required to n registers, means जो रजिस्टर होंगे वो क्या होंगे 2r, 2 स्क्वायर r, 2 to the power qr, 2 to the power 4r. So जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे आपके उतने नंबर ही आपको वेटेड रजिस्टर रिक्वायर्ड है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द 4, सो आपका एक तो हो गया 2r, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 2r से, और अप टू कहाँ जा रहा है 2 to the power nr. सो 2r से स्टार्ट किया, फर्स्ट बिट के लिए हो गया 2 स्क्वायर r, सेकंड बिट के लिए हो गया 2 to the power 3r, थर्ड बिट के लिए हो गया 2 to the power 4r, फोर्थ बिट के लिए हो गया. ओके, सो इस वे में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेटेड रजिस्टर हमारे पास रिक्वायर्ड है. सो फॉर n बिट डेटा you have required to 2 to the power n registers. So ये जो आप registers देख रहे हैं उतने number of register आपको required हो. We are giving digital data at the port A1, A2, A3 up to n. So as I told you previous, जहाँ पे ये A1, A2 up to AN जो connected है, यहाँ पे हम अपना data दे रहे हैं digital data, जिसको हमें convert करना है, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं. Clear? Where A1 is your MSB and AN is your LSB. So please remember this thing कि यहाँ पे जो A1 की value है that is your MSB, most significant bit. Okay, and AN is your LSB, least significant bit. Okay, and op-amp is attached with the resistor network with the negative feedback. So you can see here this is your operational amplifier. एंड यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने जो आउटपुट की तरफ से इनपुट पे कनेक्टेड. क्लियर? नाउ so for this circuit all resistance R equal to RF equal to R. So we are considering here all the resistance whatever the value of is R, जो भी R है ये that is equivalent to RF. जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसके बराबर ही हमने R की वैल्यू कंसीडर की है. Okay, so for this weighted resistor we have considered this value. Now in resistor network a resistance is connected to ground. Okay, if the input bit is 0, अगर इनपुट बिट आपकी क्या है 0 है तो जो रेजिस्टर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, अदरवाइज इट इज कनेक्टेड विद द माइनस VR. सो सेम आई टोल्ड यू इन प्रीवियस, ये जो वैल्यूज हैं जो A1, A2, AN ये आप डिजिटल डेटा दे रहे हो. सो लेट्स सी यू हैव 1011. ओके, सो दिस इज योर LSB, दिस इज योर MSB. So LSB कहीं यहाँ पे होगा, राइट से लेफ्ट साइड होगा. सो इफ दिस इज 1 तो ये कहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, इस VR से, क्योंकि यहाँ पे आप रेफरेंस वोल्टेज क्या दे रहे हो, VR दे रहे हो, तो ये कनेक्टेड किससे हो जाएगा, VR से. एंड अगर इसकी वैल्यू 0 है, ओके, सो देन इट विल बी कनेक्टेड विथ दिस ग्राउंड. सिंपल सा. सो व्हेनेवर द वैल्यू इज 0, जो बिट आपको कन्वर्ट करना है वो अगर 0 है तो वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, अदरवाइज इट इज कनेक्टेड विद दिस माइनस V. क्लियर? नाउ एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे कन्वर्जन हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर अ 3-bit डेटा दैट इज योर 100. क्लियर? जो डेटा हमने लिया है दैट इज योर 100. इन दिस डेटा आप जानते हो पहले से ये क्या होगा, LSB, और ये क्या होगी, MSB. So you can see here only MSB is 1 and the rest two are
जीरो वैल्यू। ओके, सो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, ठीक है, इस डायग्राम की बात करूं, इस सब में वी आर टेकिंग द डेटा 1 0 0, ठीक है, और ये क्या होता है, LSB होता है, ये लेफ्ट मोस्ट जो बिट होती है वो MSB होती है। सर्किट में MSB कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि ओनली दिस बिट जो MSB है वो वैल्यू क्या है, केवल 1 है। सो 1 का मतलब क्या हुआ, दैट विल बी कनेक्टेड इन दिस वे, ऐसे कनेक्ट होगा A1 की वैल्यू, ये रेजिस्टर क्या है, इस VR से कनेक्टेड हो जाएगा। रेस्ट आर 0 0 मतलब ये जो वैल्यू है वो इस ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो भी वैल्यूज है। सो अल्टीमेटली मतलब जहां पे भी जीरो आ रहा होगा वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो रहे, मींस वी नो नीड टू कंसीडर दीज रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस पे मतलब ही नहीं है। सो वी विल टेक ओनली दिस रेजिस्टेंस। ओके, सो फाइनल अगर मैं आपसे बोलूं कि जो डायग्राम हो जाएगा वो डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ से क्या जा रहा है, -VR, रेजिस्टेंस किसका आ गया, 2R का, और दैट इज कनेक्टेड ओवर हियर। So easily I can draw this diagram. Okay, यहाँ पे -VR, that is your 2R, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया एक, और ये आपका ग्राउंड है, माइनस प्लस, यहाँ पे V आउट और यहाँ पे R है। क्लियर? सो बाकी तो ये जीरो से कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो आगे कुछ भी हो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम यू कैन से हियर आई हैव डिजाइन हियर। So after considering all the data, we will get final this. This is a RF. This circuit. Clear? Now you have to remember this point because we are not going to in the depth of about your operational amplifier. So you have to remember कि यहाँ पे जो output होगा, that is V out, it is equal to minus times RF, your feedback resistance, upon input resistance multiply with V in. Okay, so you have to remember this formula कि यहाँ पे जो V out की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्लियर? सो माइनस RF अपॉन RI, दिस इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस, दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस जो यहाँ की तरफ से आ रहा है, जो यहाँ की तरफ से आ रहा है वो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है और फीडबैक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आप V out ले रहे हो। सो V out इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI इंटू VI, where RF is your feedback resistance, RI is your input resistance, VI is your input voltage. So in this diagram, you can say, just put these value in this formula. ये formula है, इसमें put करना है आपको V naught equal to, we already consider this RF equal to R. ये हमें पता है कि इस केस के लिए we are considering RF equal to R. So formula क्या हो जाएगा, feedback resistance minus RF अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दिस इज 2R इनटू इनपुट पे वोल्टेज क्या अप्लाई हो रहा है, माइनस। ओके, सो वी विल गेट दिस फॉर्मूला, नाउ जस्ट पुट RF इक्वल टू R, सो वी विल गेट V naught equal to minus R upon 2R into minus VR, that is VR by 2. Clear? So for 100 we are getting the value is VR by 2. So if you remember 100 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है,
4. And also you have to remember कि whenever you are going to apply this minus VR, जो आप यहाँ पे minus VR apply कर रहे हो, that will be 2 to the power n. जो भी आप suppose if you are taking the 3-bit data, so 2 to the power 3, that is your 8. If you are taking the 4-bit data, so 2 to the power 4, that is your 16. So here, for example, we have considered the data is 3-bit. So VR की value क्या maximum जाएगी? Your 2 to the power 3, that is your 8. So just from here you can say there V not equal to VR by 2. VR की value क्या है? 8. 8 by 2, that is your 4. And that is the decimal value of 4. So you have this digital data 100, and at the output you are getting this VR by 2. So in this way we can convert this digital data into the analog data.